Hello students, welcome to Avantikulam, and today we are going to continue with our chapter Structure of Atom. So last lecture में हमने क्या क्या देखा था? About the discovery of proton, neutron and electron and cathode ray tube experiment, Thomson's plum pudding model. तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं about Rutherford's model and the developments which led to the Bohr's model. So let us start. Rutherford's model. तो Rutherford was also a scientist जो कि थॉमसन के बाद आए और उन्होंने थॉमसन के मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया. बेसिकली थॉमसन ने हमें क्या बताया था? ही प्रपोज्ड दिस प्लम पुडिंग मॉडल. दिस प्लम पुडिंग मॉडल उन्होंने इसके थ्रू एटम की न्यूट्रलिटी को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, पर उनका जो मॉडल था वो क्या कहता था कि मास ऑफ एन एटम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एटम, और वो एक पॉजिटिव स्फीयर से बना होता है और उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड होते हैं. बट इवेंचुअली रदरफोर्ड आए एंड उन्होंने ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डिस्कार्ड कर दिया. नाउ रदरफोर्ड कंडक्टेड इज वेरी फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. Scattering experiment. This is also known as the gold foil experiment. जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो. तो रदरफोर्ड ने थॉमसन की जो भी मॉडल थे उसके लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए अपना एक मॉडल प्रपोज किया with the help of this particular experiment. So first of all, let us study what is this alpha particle scattering experiments or the gold foil experiment. Now before we begin with the alpha particle scattering experiment, हमें ये पता होना चाहिए कि what is an alpha particle. What is an alpha particle? I'm sure you all might have heard about it. Alpha particle is basically doubly charged helium ion. Helium का atomic number कितना होता है? 2. Its atomic mass is 4. तो this is the nucleus of the atom. There are 2 electrons. Now अगर आप हीलियम एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर लेते हो तो सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बचता है. न्यूक्लियस ऑफ हीलियम which has 2 positive charge on it. This is known as an alpha particle. तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जैसे कि आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हो. उन्होंने एक लेड बॉक्स लिया था. दिस बॉक्स इज अ लेड बॉक्स. लेड बॉक्स के अंदर रखा गया था एक रेडियो एक्टिव सोर्स. व्हाट डू यू मीन बाय अ रेडियो एक्टिव सोर्स? रेडियो एक्टिव सोर्स और अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज एन एलिमेंट which keeps on emitting alpha particles, beta particles and gamma rays. एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा एलिमेंट जो कि अनस्टेबल होता है और कंटिन्यूसली अल्फा बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज के एमिशंस प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं एक रेडियो एक्टिव सोर्स. तो उन्होंने एक लेड बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव सोर्स को रखा एंड थ्रू अ वेरी थिन स्लिट, एक बहुत ही थिन स्लिट थी जिसके थ्रू एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करवाया. नाउ दिस गोल्ड फॉइल वॉज वेरी थिन. कितनी थिन? up to 100 nanometers. I hope you can realize 100 nanometers मतलब बहुत ज़्यादा thin foil थी वो. And then around that gold foil उन्होंने पूरी ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी. Now if you remember हमने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था कि जिंक सल्फाइड क्या करता है. जिंक सल्फाइड एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल होता है जिसके ऊपर अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो ये सिंटिलेशंस प्रोड्यूस करता है. सिंटिलेशंस मतलब फ्लैश प्रोड्यूस करता है विच हेल्प्स इन द डिटेक्शन ऑफ पार्टिकल्स. तो उन्होंने गोल्ड फॉइल के पूरे आसपास जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा ली सो दैट वी कैन डिटेक्ट द अल्फा पार्टिकल्स विच पास थ्रू दिस गोल्ड फॉइल. दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय रदरफोर्ड. देन विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ही मेड सम ऑब्जर्वेशंस, और उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ही मेड सम कंक्लूजन्स and he proposed his Rutherford structure of atom or Rutherford model of atom. Okay, so a stream of high energy alpha particles from a radioactive source was directed by a thin foil which is about 100 nanometer of gold metal.
Now a thin cold foil had a fluorescent zinc sulfide screen around it. Now whenever any alpha particle struck this zinc sulfide screen, it would produce flash and we can detect the particles. Now what were the observations made by him? Coming to the observations. So these are very important, guys. You need to remember it, and I hope you guys already have an idea about the observations. First observation was most of the alpha particles pass through the foil without any deflection. Most of the alpha particles, pass through the foil undeflected. Then very few alpha particles deviated by small angles. Very few alpha particles suffered a deviation of more than 90 degrees. Deviated by more than 90 degrees. By an angle more than 90 degrees. And very few means 1 out of 20,000 alpha particles. 1 out of 20,000 alpha particles bounced back or retraced its path. These were the observations which were made by the Rutherford during his gold foil experiment. Now what do these observations indicate? इन observations से उन्होंने conclusion क्या निकाला? Now you guys might have got an idea that alpha particles जो है they are positively charged because they are doubly charged helium ions. तो इनके ऊपर positive charge कितना होता है? 2. Yeah, the charge equivalent to 2 protons. तो इतना positive charge इनके ऊपर होता है. So from each of these observations he made a conclusion. Now because most of the particles pass undeflected, it means, what is the conclusion? That atom mostly comprises of empty spaces, or there is a lot of empty space in an atom. एक एटम के अंदर बहुत सारी empty space होती है, बहुत सारी खाली जगह होती है. So you could get an idea कि because alpha particles undeflected pass हो रहे हैं, तो एक atom के अंदर बहुत सारी खाली space होती है. Now because few alpha particles deviated by small angles, so we all know that like charges repel each other. ये बहुत basic law है electrostats का, that like charges repel and unlike charges attract. So because alpha particles positively charged हैं and they are facing repulsion, they are scattered or deviated by some angle. It means इस atom के अंदर कोई positive charge है, कोई एक ऐसा region है. Atom consists of a positively charged region. Now because very few alpha particles deviated by an angle greater than 90 degree, मतलब, and 1 out of 20,000 alpha particles bounced back, means this positively charged region, is very small as compared to the atom. So these were the observations जिनकी मदद से Rutherford finally एक structure को डिज़ाइन कर पाए. और उन्होंने इस positively charged region को क्या नाम दिया? What we know today as nucleus. Okay, so let me add one more slide here for you guys.
So finally Rutherford devised a structure which was something like this. According to Rutherford, that all the mass of the atom, the entire mass was concentrated at the nucleus, which was very small. J.J. Thomson के मॉडल में हमने पढ़ा था that radius of an atom is of the order of 10 to the power minus 10 meters or 1 angstrom. Rutherford ने coin किया कि radius of nucleus is of the order of 10 to the power minus 15 meters. Sorry. Radius of nucleus is of the order 10 to the power minus 15 meters. He also established a model which said that all the mass of the atom, the entire mass of the atom, is concentrated at the center within the nucleus, which comprised of the positively charged neutrons and the positively charged protons and the neutral neutrons, and that the electrons revolved around the nucleus just like planetary motion. So he devised this planetary structure of an atom, and he also postulated that the electrons and the protons were held together by electrostatic forces of attraction within the atom. Electrostatic forces of attraction. So he drafted this planetary model of atom. He proposed that electrons revolved in circular orbits around the nucleus. And they were held together by electrostatic forces of attraction. And he also discovered this nucleus. और उसकी रेडियाई कितनी बताई? 10 to the power minus 15 meters. Now let us come to the mathematical formulation. According to Rutherford, what was the mathematical formulation? Okay, the mathematical formulation of Rutherford's model. So if this is the nucleus of an atom, this is an atom, here's an alpha particle, this is an alpha particle which is coming, and because you know this is also positively charged, this is also positively charged, so they will have a head-on collision. But they will not strike each other. It will pass through some distance. Suppose this angle is theta. Now if n theta is the number of particles, the total number of particles scattered by an angle theta. Theta is the angle of scattering, and if n is the total number of alpha particles sent. And theta n, and f is the fraction of alpha particles which undergo scattering with an angle theta. Then you must remember that n theta is inversely proportional to theta. What does this mean? This means that maximum particles, that higher number of particles will undergo scattering with very less angle. N theta is directly proportional to theta. N theta is directly proportional to theta. Higher number of particles, इसका मतलब हुआ कि higher number of particles will scatter by less angle. This
this is the first point. The second point over here is the fraction of particles, this f theta, is directly proportional to thickness. जितनी ज़्यादा गोल्ड फॉइल की थिकनेस होगी, थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल, तो जितनी ज़्यादा गोल्ड फॉइल की थिकनेस होगी उतने ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स विल बी डिविएटेड बाय अ सर्टेन एंगल. एंड सिमिलरली f of theta is directly proportional to the density of foil. It is understood density ज़्यादा हुई तो thickness भी ज़्यादा होगी. इस वजह से same angle पे number of particles means more number of particles will be scattered. And one more point that you can keep in your mind is f of theta is inversely proportional to the fourth power of sine of half angle. ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट फॉर योर नॉलेज यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो. दिस वॉज डिवाइस्ड बाय रादरफोर्ड फ्रॉम इट्स ऑब्जर्वेशंस. सो डिड यू गेट व्हाट वाज हिज मॉडल? ही सजेस्टेड दिस प्लानिटरी मॉडल. उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, and they are held together by electrostatic forces of attraction. Now coming to the limitations. Finally हम ये मॉडल भी फॉलो नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते? Because of certain limitations. What are the limitations? So firstly, he did not specify the arrangement. He did not specify the arrangement of electrons अराउंड न्यूक्लियस. उन्होंने कहा कि वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, बट किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं इसका कोई सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया. दिस वॉज द फर्स्ट लिमिटेशन. एंड द सेकेंड लिमिटेशन वॉज कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन, मैक्सवेल वॉज अनदर साइंटिस्ट जिन्होंने थ्योरी ऑफ रेडिएशन दी थी. एंड व्हाट डिड हिज थ्योरी ऑफ रेडिएशन से? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन, if any charged particle undergoes circular motion or uniformly accelerated motion. आपको पता है ना कि circular motion is a uniformly accelerated motion. So if any charged particle undergoes uniformly accelerated motion, then it will continuously emit energy. It will continuously emit energy. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर अकॉर्डिंग टू रादरफोर्ड्स मॉडल एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है, वो एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली रेडिएट कर देनी चाहिए एंड इवेंचुअली एक स्पाइरल बना के न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाना चाहिए. इफ दिस इज द इलेक्ट्रॉन जो कि अभी ऐसे घूम रहा है, तो एनर्जी रेडिएट करते करते इट मस्ट फॉर्म अ स्पाइरल एंड फाइनली कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस. इसका मतलब क्या हुआ कि एटम तो अनस्टेबल होना चाहिए, बट वी ऑल आर वेल अवेयर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. सो दिस डज नॉट हैपन in the case of atom. This does not happen in the case of atom. Rutherford had no explanation to this. Because of these limitations, हम लोगों ने Rutherford मॉडल को भी डिस्कार्ड कर दिया. हम लोगों ने नहीं किया, साइंटिस्ट ने किया. Other scientists discarded Rutherford's model also. क्योंकि वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए थे. ना उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि अरेंजमेंट कैसा होता है. और मैक्सवेल की थ्योरी ऑफ रेडिएशन काफ़ी वेल प्रूफ थ्योरी है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जा रहा है तो इट विल कंटिन्यूसली रेडिएट एनर्जी. और इस अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी रेडिएट करके स्पाइरल फॉर्म करके
इवेंचुअली न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और एटम वुड कोलैप्स, पर एटम कोलैप्स नहीं होता है बिकॉज एटम इज हाईली स्टेबल. वी आर अवेयर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. He could not explain this, therefore this was also discarded. Now before we move towards the Bohr's model, you must know Planck's quantum theory. कि Planck की quantum theory क्या कहती है? And for that you must be aware of electromagnetic radiations. Can you give me a very simple example of electromagnetic radiation? Anyone? Yes. Light. Light is the best example of an electromagnetic radiation. अब एक electromagnetic radiation में होता क्या है? So here also, if a charged particle is undergoing motion, there will be simultaneous electric and magnetic fields. Simultaneous electric and magnetic fields produced by that charged particle, which will be perpendicular to each other, and in turn both of them will be perpendicular to the velocity or the path of propagation of that charged particle. Here I'll show you an example. This be the electric field. This would be the magnetic field. So E, P and V. This is how it is. This is how an electromagnetic radiation behaves. And therefore the velocity or the path of propagation can be written as E cross B. Remember this. This is important. Now before moving on, you should know what are the characteristics of an electromagnetic radiation. Basically यहाँ पर क्या हुआ है, एक पार्टिकल ने वेव नेचर एग्जिबिट किया. Particle exhibited wave nature. So we are linking a particle and a wave. These developments will lead to Bohr model, and thereafter the final model which we follow today, that is the quantum mechanical model. तो पार्टिकल और वेव को यहाँ पे हमने लिंक किया हुआ है. तो फॉर दैट यू शुड नो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव. What are the characteristics of a wave? So let us start with the characteristics of a wave. I hope this was clear. Okay. So you might have heard the term wavelength. You all might have heard the term wavelength. Characteristics की हम लोग बात कर रहे हैं अब. Characteristics of a wave. So all of you might have heard the term wavelength. What do you mean by wavelength? The distance covered in one wave, or the distance between two crest and trough. This is a crest and this is a trough. This is a trough. This is a crest. Distance between two crests is known as wavelength, or between two troughs is known as wavelength. Second is the frequency. Frequency denoted by nu, wavelength denoted by lambda. So frequency means the number of waves passing through a point in space, passing through a given point in space in 1 second. In 1 second. 1 second में कितनी waves pass हो रही है through a given point? That is known as the frequency. Then comes the amplitude. Third is the amplitude.
So this distance, this maximum displacement of the particle, or the distance between the mean line and the crest, is known as amplitude. Fourth one is wave number. Wave number denoted by nu bar, which is equal to 1 upon lambda. So coming to the Planck's quantum theory, ये characteristics हमने देखी. What are the characteristics of a wave? Electromagnetic radiation की हमने बात की, उसमें simultaneous electric and magnetic fields होती है. Now coming to the characteristics of wave, wavelength क्या होती है, frequency क्या होती है, amplitude and wave number. Now what does the Planck's quantum theory says? So it says that different atoms and molecules, different atoms and molecules emit or absorb radiations, in discrete quantity. Discrete मतलब in the form of numbers, not continuous but particulate. And the smallest discrete quantity, known as the energy packet, smallest packet of energy, is known as quantum. That is why it is named as the quantum theory, discovered by Planck. Now according to Planck's quantum theory, the energy contained by any quantum or the energy packet is directly proportional to the frequency of the wave. So eventually when you remove the proportionality sign, you introduce a constant named as Planck's constant. So Planck's quantum theory works in the direction of quantization of energy. प्लैंक जो है वो अपनी क्वांटम थ्योरी के थ्रू क्वांटाइजेशन कर देता है एनर्जी को क्वांटाइज कर देता है. मीन्स एनर्जी विल बी प्रेजेंट एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दीज packets of energy or these quantum, which means total energy is equal to NH nu. Total energy is equal to NH nu. Okay. And you also know that C equals to nu lambda. C is the speed of light, nu is the frequency of wave, lambda is the wavelength of wave. So therefore E is equal to NHC by lambda. These are very important formula. Remember them. E equals to H nu, E equals to NH nu, E equals to NHC by lambda because C equals to nu lambda. And quantization of energy का क्या मतलब होता है? According to Planck, जितने भी atoms और molecules हैं वो radiation emit या absorb करते हैं in discrete quantities, and the smallest packet of energy is quantum. Okay, so he has quantized the energy. Now we'll come to the Bohr's atomic model. कि बोर ने क्या कहा था? तो Niels Bohr, his full name was Niels Bohr, in 1913 tried to devise an atomic structure to overcome the limitations of Rutherford model. To overcome the limitations of Rutherford's model. Niels Bohr was the first person to explain quantitatively the general features of structure of hydrogen atom and its spectrum. He was the first person who explained quantitatively. Quantitatively means very properly explained the structure of hydrogen atom and the spectrum. And its spectrum.
what is the spectrum? We will cover this topic in the coming lectures. अभी हम बोर के एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या postulates दिए. So he used Planck's concept of quantization. Planck's की क्वांटम थ्योरी का यूज करके he devised a structure. Now what were the postulates? As you can see, this is directly picked up from NCERT. So it is important. It is important because it is given in NCERT itself. So let us come to the postulates given by Bohr. First of all, हम यहाँ पर लिखते हैं क्या postulates दिए गए थे. The first postulate given by Bohr was that electron can move around nucleus in a circular path. Electrons move around nucleus in circular path. Nucleus in circular paths. Do note it down. यहाँ तक तो Rutherford ने भी बताया था, but Bohr wanted to overcome his limitation. So he told that electrons move around the nucleus in circular paths of fixed energy and radius. उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जिन भी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उनकी एनर्जी और उनका रेडियस फिक्स्ड है. ओके, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये बात तो रदरफोर्ड ने भी कही थी कि दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, सो सेकेंड इज द इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus due to the centripetal force. What is the centripetal force? The force acting towards center. ये atom है, ये electron है. The force which is acting towards the center is known as the centripetal force. Okay. So the electrons revolve around the nucleus due to the centripetal force. Now where does the centripetal force come from? So this centripetal force provided by the electrostatic forces of attraction. We know that centripetal force is mv square by r, which is equal to the electrostatic force. Electrostatic force का formula ये कैसे आया? I hope every one of you got it. Let me explain it to you. So electrostatic force is K Q1 Q2 upon the distance का square. So what is Q1 over here? The charge on an electron, which is E. What is Q2 over here? The charge of the nucleus, which is also integral multiple of the charge of electron, because charge on an electron is equal to the charge of proton. So it is Ze. Z is the atomic number of protons present in the nucleus upon the radius का square. And centripetal force is mv square by r. Every one of us knows that. This was the second postulate. Third postulate is that energy of shells is fixed. Energy of the shells. He called those orbits as the circular paths were called as orbits or stationary states or shells. So the energy of shells is fixed.
energy of shells is fixed for a given atom. It is fixed for a given atom. And these shells are known as, and they are called as, stationary states. Stationary states. That is, because energy of the shells is fixed, it means that the electrons present in these shells, they will not lose their energy. They will not lose or gain or radiate any energy when they are present in these stationary states. Let me add a slide for you people over here. Okay. So the fourth postulate is when the electrons get or gain energy, they are excited to higher energy levels. Gain energy, they are excited to higher energy levels. And they eventually lose their energy and radiate it to come down, to come back to their original ground state. How do they radiate their energy? They radiate their energy in the form of packets of energy or quantum. For example, if this is the case, here is an electron, this is the nucleus, here is an electron, it gains some energy, h nu, it will get excited, jump to the higher energy level, stay here for very less time, then will again radiate the energy and come back. This is what happens according to the Bohr's model. Now energy is emitted or absorbed. Energy is emitted or absorbed when electrons jump from one energy level to another. When electrons jump from one energy level to another. And the last postulate of Bohr's model was only those orbits are permitted, in which the angular momentum, in which L, that is the angular momentum, is an integral multiple of h upon 2 pi. Angular momentum of the electron is an integral multiple of h upon 2 pi. That is, mathematically अगर आप इसको लिखने जाओगे तो it would be L, that is mvr, mass of electron, velocity of electron, is equal to nh upon 2 pi. And here n is 1, 2, etc. इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होगा? द डेल्टा ई इक्वल्स टू ई एफ माइनस ई आई. और लास्ट वाले पोस्टुलेट से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम L is also quantized. L is also quantized. So these were the postulates of Bohr's model. हम एक बार और इनको रिवाइज करते हैं कि बोर ने एक्चुअली क्या मॉडल दिया. तो बोर ने कहा कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया इट इज़ टू एन एक्सटेंट ओके. मीन्स न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, पर
चूँकि मैक्सवेल की रेडिएशन थ्योरी को रदरफोर्ड का मॉडल सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, तो बोर ने डिज़ाइन किया उनका अपना मॉडल इन 1913, जिसमें उन्होंने प्रपोज किया कि जो इलेक्ट्रॉन से दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी, उनका रेडियस और उनका एनर्जी फिक्स्ड होता है, और ऐसे ऑर्बिट्स को, ऐसे पाथ को इन्होंने कहा ऑर्बिट्स, और स्टेशनरी पाथ, स्टेशनरी स्टेट, और शेल्स. Okay, so there are multiple shells. उन्होंने कहा कि there are n number of shells, infinite shells, but only those shells are allowed, in which the angular momentum of an electron is an integral multiple of h upon 2 pi. सिर्फ वही शेल्स अलाउड है और उन्हीं को हम कहते हैं स्टेशनरी स्टेट. और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेशनरी स्टेट में होता है तो वो कुछ भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है. And the electrons are revolving around the nucleus due to the centripetal force, which is provided by the electrostatic forces of attraction. And eventually centripetal force और centrifugal force एक दूसरे को balance कर देते हैं. Centripetal force is the force acting towards the center, और electrostatic forces of attraction की वजह से centrifugal force develop होगा, which will give you this mathematical equation. And then when electron gains energy, they are excited to higher energy levels, and when they lose energy they come back to their ground states. These are ground states जहाँ पर वो अपनी stationary state में होते हैं. जब उन्हें energy मिलती है तो वो excited state में चले जाते हैं. Remember these terms. वो अपने excited state में चले जाते हैं after getting energy, those high energy states. Then whenever an electron emits or absorbs the radiations, it is in form of quanta, because Bohr ने प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी यूज़ की थी, तो उन्होंने भी माना था कि एनर्जी हैज़ पार्टिकुलर नेचर. एंड द लास्ट वन जो हम पढ़ चुके हैं कि एंगुलर मोमेंटम भी इसमें क्वांटाइज्ड होता है, नॉट जस्ट एनर्जी बट ऑल्सो द एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट द रेडियस. बोर के एटॉमिक मॉडल में, एज यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी. सो K, L, M and N shells are given. So these are the energy levels around the nucleus of an atom. You can read this from the book itself. These are the postulates जो हमने अभी डिस्कस किए हैं. Now coming to the radius of nth orbit. So may it be radius or velocity और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोर्स मॉडल. तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की बात करते हैं. वेयर डिड इट कम फ्रॉम? तो हमने अभी जो इक्वेशन पढ़ी थी, mv²/r इक्वल्स टू kZe²/r². यू कैन सी दिस. ये हमने बोर्ड के पोस्टुलेट से पढ़ी है. So on solving this, mv²/r is equal to kZe²/r². Cancelling this, r comes out to be kZe²/mv². Okay. Which implies r is equal to n²h²/4π²m/kZe². When we substitute the value of v over here, you will get these terms. So on solving this, you will find that radius is equal to 0.529 to n²/z angstrom. Now this, students, is a very important formula. This is a very important formula.
The radius is asked multiple times in JEE mains and even in advanced. So this is a very important formula. Remember, radius is equal to 0.529 into n square by z angstrom. What is the n? N is the energy level which is given to you, and z is the atomic number. Z is the atomic number. So can anybody of you tell me what would be the radiation? What would be the radius of hydrogen atom? For an hydrogen atom, n is equal to 1 and z is equal to 1. So it would be 0.529 angstrom. Got it? Moving on to the energy of nth orbit. As you can see over here, these were the postulates, these were the mathematical formulations of the postulates given by Bohr. इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, but you should know, you should remember this. So this is the formula for energy. On solving it, total energy, on substituting all the values, substituting the value of pi, z, pi, k, e, everything. So total energy of an electron moving in nth orbit, would be, again ladies and gentlemen, this is a very important formula, 13.6 into z square by n square electron volt per atom. This is an electron volt per atom. अगर आपको कोई जूल पर एटम में निकालने को कहे तो इट वुड बी -2.18 into 10 की पावर -20. Z square by n square would remain same, joule per atom. Again, you need to learn these formula. They're very, very important. Getting it? So as you can see, the total energy is -13.6 z square by n square, -13.6 z square by n square electron volt per atom. This is the potential energy. I hope every one of you knows that total energy is equal to potential energy plus kinetic energy. Yes? Total energy is equal to minus times of kinetic energy, and total energy is equal to half of potential energy. This will help you not only in chemistry but in physics also. You need not remember the kinetic and potential energies, but it is quite easy. You can derive them easily from the total energy. The important formula is this. En, that is the total energy of an electron moving in nth orbit, is -13.6 into z square by n square electron volt per atom. And if it is asked in joule per atom, here it is, this one. And you should also know that 1 joule is equal to 2.4 calories. तो अगर कैलोरी में कन्वर्शन आता है तो you can again convert it. Now okay, we'll come back to this slide. Velocity of orbit क्या होगी? This is again the important one. ठीक है, ये आपको इतना याद नहीं रखना है, but remember this formula. V is equal to 2.18 into 10 to the power 8 z by n centimeter per second. It is centimeter per second, remember. So before coming to the limitations, just have a glimpse of all the important formula. Frequency आपको पता है, it is V by 2 pi r, और everybody of us knows omega equals to 2 pi f. Omega is V by r, it is 2 pi f. So f is V upon 2 pi r. ये फिजिक्स में भी काम आता है, तो ये बेसिक फॉर्मूले इन्हें याद रखना. रेडियस आपने देखा, वेलोसिटी आपने देखा, यहाँ पर ये मीटर पर सेकेंड में, इसलिए इट इज 10 to the power 6. ये एंगस्ट्रॉम है, रिमेंबर द यूनिट्स. दिस इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी विल बी इन हर्ट्ज, एंड दिस इज टाइम पीरियड विच विल बी इन सेकेंड. रिमेंबर द फॉर्मूलाज अगेन. फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का रिलेशन तो आपको पता होगा. They are inversely related.
Okay, so coming to the limitations of Bohr's model, the last part of today's lecture. अब बोर की मॉडल को भी इसने बहुत हद तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, बट देयर वर अगेन सम फिनोमेना जिनको बोर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए. व्हाट वाज इट? ही एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वेरी प्रॉपर्ली, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन the line spectra of atoms containing more than one electron atoms. Second, he could not explain the presence of multispectral lines. Third, he could not explain Heisenberg's uncertainty principle. Now, what is Heisenberg's uncertainty principle? We will cover this also in the coming lectures. There's a lot to cover still. And he also could not explain Zeeman effect and Stark effect. You don't have to study both of these effects in deep, पर आपको पता होना चाहिए कि Zeeman effect क्या होता है. Zeeman effect means the splitting of spectral lines in presence of electric field. And what is Stark effect? It is the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field. So these were some of the phenomena जो कि बोर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये उनकी लिमिटेशंस बन गई. एंड वी डिड नॉट फॉलो बोर्स मॉडल होल हार्टेडली. वो लाइन स्पेक्ट्रा को, जो भी एटम्स हैं जिनके अंदर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. मल्टी स्पेक्ट्रल लाइन्स का प्रेजेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाए. हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड द ज़ीमन एंड स्टार्क इफेक्ट्स. ये सब क्या होता है? वी विल कवर दिस इन द कमिंग लेक्चर्स. सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर टुडेज लेक्चर. आज हमने क्या क्या कवर किया है? वी कवर्ड रदरफोर्ड्स मॉडल. रदरफोर्ड्स का जो मॉडल था वो, उसकी क्या लिमिटेशंस थी, क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उस एक्सपेरिमेंट का अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट्स, एवरीथिंग. एंड देन वी केम टू दी बोर्स मॉडल. और बोर्स मॉडल के पहले हमने डिस्कस किया प्लैंक का क्वांटम थ्योरी, जिसमें उन्होंने क्वांटाइजेशन किया था. एंड बोर्स मॉडल में हमने क्या डिस्कस किया? वी डिस्कस दी पोस्टुलेट्स, कि कैसे बोर ने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का यूज़ करके रदरफोर्ड की लिमिटेशंस को ओवरकम किया, कैसे उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया, and also how he told that angular momentum is also quantized. The mathematical formulation, और कैसे हमने बोर्स मॉडल की मदद से रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के फॉर्मूले डिराइव किए हैं. गाइस, दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इट कम्स डायरेक्टली इन जेईई मेंस. बिल्कुल डायरेक्टली आता है many times, so do remember those formula. And in the next lectures we will be covering about the quantum mechanical model of the atom and Heisenberg's uncertainty principles, Aufbau principle, the electronic configurations and many more. So till then, stay tuned and stay connected with Avantikulam. Thank you.